Welcome back children once again to my channel. आज पिला माने ए लेटर टू गॉड रो ऑब्जेक्टिव विषय देखा ये देखी पारछो से चपट यार छ माने ऑब्जेक्टिव देखिबा आ भल भाबरे बुझिबा को चेष्टा करबा. आई होप यू विल ऑल गेट दैट ऑल. ओके चिल्ड्रन, मूविंग बैक टू द क्वेश्चंस. At the high school, Mahatma Gandhi autobiography. It is autobiography of Mahatma Gandhi. Life autobiography. Autobiography why? Because this story has been written by himself. Therefore, this is autobiography. If a story of a person written by himself, that person whose story is about, then the story is or that biography is autobiography. So coming back here, first question to be told. This is your first question. According to Gandhi जी को अनुसार there was nothing to memorize in dash 2022 ये बोर्ड को रे आस्थिला कोठारे बेसी मने रखबा को पड़े मुखत करबा को पड़े नहीं है ना. Memorize means to what? Memorize. देखिए पार्थे मैंने memorize है ना. तले कौन विषय memorize करबा को बेसी पड़े नहीं. आमे टिके ये चेंज कर देबा, कार्ड के चेंज करबा देखबा. ये बोला को कना से एटा बोला से तले ऑप्शन गुड़ा कहला देखि पारछ तुम. ये हैला पार्शियन हैला, आ ये हैला संस्कृत, आ ये हैला जियोमेट्री, आ ये हैला जियोग्राफी हैला छमने. एबे एमानो को हमें किमिति एलिमिनेट करबा. हाउ कैन वी एलिमिनेट दोज ऑप्शंस व्हिच आर नॉट मीट टू बी सपोर्टिंग द आंसर or addressing the answer. There is nothing described or told or mentioned about geography in this topic at the high school. So D is cancelled, right children? D is cancelled. So as Sanskrit and Persian, these are the three subjects has been described. This one, and this one. So Persian or Sanskrit or geometry, which one nothing to be memorized? Your answer will be C. This one is your answer. So this is cancelled. So is this one. Okay. Moving back to number 2. Second question is about Gandhi retained his false notion about handwriting until he went to dash. Here the dash given. Okay children. This question make existence in 2021 and 22 in a board exam. Board exam रे 2022 21 और 22 रे यार आविर्भाव थिला. तेणु छमने मन देखी याको सुनवा उचित, राइट. तेबे कथाला कौन? गांधीजी रिटेन हिज फॉल्स नोशन तांकर भूल धारणा से रखी थिले हैला अबाउट हैंड राइटिंग अंटिल ही वेंट टू डैश. हैंड राइटिंग विषय तांकर गोटे भूल धारणा से डैश को गला पर्यंत बही नहीं थिले मा तांको पाकर थिला. एबे गोटे जगह एठी कहै इट मीन्स दैट ए प्लेस इज आस्क्ड. सो योर ऑप्शंस आर इज दैट प्लेस इज साउथ अफ्रीका, और इज दैट प्लेस इज इंग्लैंड, और इज दैट प्लेस अमेरिका. ए इज मिसिंग, सॉरी फॉर दैट चिल्ड्रन. और अहमदाबाद. डी नथिंग इज मेंशन अबाउट अहमदाबाद. डी इज कैंसल, राइट. ऑफ कोर्स ही बिलोंग टू गुजरात. अमेरिका सी also invalid option. So ये भी कैंसिल होगा. इंग्लैंड से तो वकिलाती कर पड़ी ना
एटा D B भी cancel होगा. B is also cancel. So therefore your answer will be A. A will be your answer. Okay children, A तुम्हारो answer है वो. I hope you are getting children. Coming back to third question. तृतीय प्रश्न है कौन छे What did Gandhi always receive from his teachers? तांको टीचर पाखरु से सर्वदा कौन ग्रहण करते. एबे टीचर पाखरु तो गुप्त ग्रहण करबेन सीधा कथा. कौन ग्रहण करुथबे तबे ऑप्शन गुडिक तुमने एठारे देखि पारछ. प्रश्न तो यह What did Gandhi always receive है ना from his teachers. ऑप्शन गुड़क है देयर एफेक्शन तांकर स्नेह ममता है ना ए रिब्यूक तांकर गाड़ी है ना पनिशमेंट तांकर दंड रिसीव करुले ना डिस्करेजमेंट तांकर हतोत्साह करुवा कथा सब रिसीव करुले. दिस आर योर फोर ऑप्शन in support of your answer. You are asked to find one of the option which is correct. So which one is your correct option? Let's discuss children. B. Nothing rebuke has been awarded to Gandhi. So B is cancel. Rebuke तो गाड़ी गुलो जो एटा किसी ठीक नहीं छो मने है ना. या को तुम मने स्कॉल्ड कोई पारबो गाड़ी छो मने है ना. ये को तुम स्कॉल्ड कोई पारबो है गेला ना. पनिशमेंट तो दंड जानी आउ डिस्करेजमेंट हतोत्साह है ना. सो बी तो कैंसल हम. डिस्करेजमेंट एटा सेमती किछि लेखाइनी. सो डी इज आल्सो कैंसल. कमिंग बैक टू ए एंड सी. लेट मी डिस्कस चिल्ड्रन व्हिच वन इज करेक्ट. सो लिसन टू मी प्रॉपर्ली and let me describe it. So C, punishment, no. This is not something that he said he always receive. He does not receive always that punishment. Once he has been punished, है थोड़े से दंड पाइथिले. एबे ए हेबो यार अर्थ आंसर. तांको पाको सर्वदा से स्नेह ममता ही पाउथिले. आशा करछ माने बुझी पाउछ. कमिंग बैक टू द फोर. ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द स्कूल यूज टू सेंड टू हिज पेरेंट एवरी ईयर. स्कूल बापा मामा को अभिभावक मान को कौन प्रत्येक वर्ष पठे देउतले. ये है तुम्हारा प्रश्न. द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द समथिंग दैट यूज टू बी सेंट टू द पेरेंट एवरी ईयर. What are those some things? Option being given are, you can see children this one. Books. Where are those books which had been sent to the parents every year? Or his attendance certificate or attendance certificate about whether your boy or students was found to be attending class or not. Or C, certificate of progress and character. Is it the option certificate of progress and character? Or D is sport certificates. Which of these four are your answer? पिलाने बुझी पाइल. बुक तांको दिया हुए कि बुक गुड़ाक तुम पेरेंट को प्रत्येक वर्ष पठे दिया हुए कि ना तांकर अटेंडेंस पठे दिया हुए ना सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर ना हिज स्पोर्ट सर्टिफिकेट. प्रथम तो हिज स्पोर्ट सर्टिफिकेट इट इज नॉट मेंशन. सो देयरफॉर डी एलिमिनेट करो प्रथम गोटा को स्पोर्ट सर्टिफिकेट. ये स्पोर्ट सर्टिफिकेट इज नॉट ऑप्शन टू बी टेकन to be welcome to be accepted, right? So D is cancel. Coming back to others. Books, no. What should be done giving or providing books to the parents? Will they read a book at the time? That is not important things to be said, because at the times books are not in plenty, and other way the people are not educated at that time. The literacy rate is very low in India at that time, because we are under rule of foreign. So therefore books are not supposed to be given to provided. So it is incorrect. Another exact correct answer.
his attendance certificate, no, it is also not correct. So B is also cancelled, B भी हबो नहीं. So C is your option correct answer where you are asked that certificate of progress and character used to be sent to the parent every year. So this is your correct answer. I hope you are getting, children. एबे एठी गोटे ग्रामर होची छुआ माने एठी गोटे ग्रामर यूज हेची यूज टू दिस वन. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मॉडल. ओके या गोटे तुमर मॉडल अटे आउ एटा केताडे यूज हुए जदि कोनसी काम अतीत रे हेउची आउ होउतला एबे तापर परवर्त समय बंद हेची ताले तुमे यूज टू लेखी पारे हबो. यूज टू कैन बी यूज इफ समथिंग हैड बीन डन इन द पास्ट हैला हैड बीन इन एक्शन हैड बीन इन एक्शन बट लेटर for some reason that got to skid or got to stop. So in the sense used to can be written. I used to play cricket in my childhood. I can write like that. Okay, children. So 4 number is done. Coming back to 5 number. So this is your 5 number. You can see the question, children. This is 5 number. Question is, what did Gandhi never have from this school? What did Gandhi never have from his school? What is something that Gandhi was not believed to be given? Any objection? Any objection? कौन सी सेना होता यह ताको मिलु नथला केबे ना एनी एनकरेजमेंट कौन सी उत्साह ताको मिलु नथला. एबे क्वेश्चन व्हाट गांधी नेवर हैव केबे भी से पाउ नथले ताले प्रथम ऑप्शन रा जहां को देखबा जदी प्रथम ऑप्शन व्हिच कैन बी सीन इज प्रथम ऑप्शन कौन छ माने ये कौन एनी एफेक्शन है ना एनी एफेक्शन हम कि तापर एनी एनकरेजमेंट ये है तो मोर बी ना जदि आम सी देखा कॉर्पोरल पनिशमेंट ये है तो मोर कॉर्पोरल पनिशमेंट माने शारीरिक दंड हम कि ना ए बैड सर्टिफिकेट ना खराब सर्टिफिकेट एम मध्य कौ जिनसटा तांकू केबे भी मिली न थिला एबे अन्य गुड़ा मिलूला कौन से गुड़ा भी देखा जदि एनी सर्टिफिकेट तो पाउथले सर्टिफिकेट प्रोग्रेस एंड करेक्टर हैड बीन व्हाट यू टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एवरी ईयर. सो एज वैलिड एनी एनकरेजमेंट भी मिलू पॉजिटिव वर्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट एटा भी तो मिलूला आ कौन एटा भी नथिला बैड सर्टिफिकेट तांको केबे भी बैड सर्टिफिकेट मिली ना. ही हैज नेवर बीन अवॉर्डेड टू बैड सर्टिफिकेट. Okay, so again B any encouragement B also will be invalid in the sense that encouragement might have been given to him ताको दिया जाऊ तो बनी तो कॉर्पोरल पनिशमेंट भी तांको शारीरिक दंड भी मिलूला ताले ये भी आसबनी ताले एटा ही पहुंचला डी बैड सर्टिफिकेट. he had never been awarded or blessed with bad certificate throughout his life in school. So D is your proper answer, correct answer to be welcome. Next question to be done is 6. This one I can see, children. Number 6. ये आसीगला छुआ माने नंबर 6 क्वेश्चंस आ यहा को भी आमे भलो भाबरे मींस विथ अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी एंड केयरफुलनेस वी विल रीड थ्रू माने गो थ्रू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन बीइंग रेड इज how much did Gandhi receive as scholarship when he was in 5th? ताले से 5th रे और 6th रे स्कॉलरशिप पाइथले नहीं ना डेफिनेटली 5th रे ते पाइथले 6th रे बेसी पाइथले. ये तो मोरो क्वेश्चन अटे. क्वेश्चन वाला कौन how much did Gandhi receive as scholarship when he was in the 5th standard है ना. ए ऑप्शन है तुमरो ये
ଯାହାକି 4 rupees କହୁଛି। B ହେଲା 10 rupees, ଆଉ C ହେଲା 6 rupees, ଆଉ D ହେଲା 5 rupees। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଟଙ୍କା ଏ ହେଲା ତୁମର 4 ଟଙ୍କା, ନା B 10 ଟଙ୍କା, ନା C 6 ଟଙ୍କା, ନା D ହେଲା 5 ଟଙ୍କା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ fifth standard ଥିଲେ, when he was fifth, he had been awarded, given or allotted, or he received. Let me discuss, children. First one is the 10 rupees, it is given in 6, so B is cancelled. Neither he has been given 6 rupees, this is also cancelled. Neither he has been given 5, so D is also cancelled. So 4 rupees is your answer, right? Now moving back to 7 number. 7 number also will be read properly. What was the amount of scholarship that Gandhi obtained when he was in 6th standard? Okay, when he was in 6th standard, what was the amount to be received by Gandhi? महात्मा गांधी को द्वारा जेते से 6 क्लास होते केते टंकार से टंका माने रिसीव करथिले पाइथिले से स्कॉलरशिप रे वृत्ति रे हैला छ माने तले व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप that Gandhi obtained when he was in the 6th standard? एते से 6th श्रेणी रो थिले। ऑप्शन गुडी को हैला 20 rupees 20 टंका पाइथिले कि। ऑप्शन बी 6 rupees 6 टंका, आउ सी हैला 10 rupees। जेमती ही पूर्व क्वेश्चन रे कहथिली, in the last question I told you that 10 rupees has been given or received by Gandhi when he was 6th class. So C is your answer. So A 20 rupees is not the proper answer to be supported. Neither 8 rupees is D, neither 6 rupees in B. So 10 rupees to be given at 6 and 4 rupees to be in 5th. Okay children, these are two amount given in respective classes. I hope you are getting. आशा कर माने तुमने बुझी पारुछ। आज जो बुझी पारन कमेंट बॉक्स इधा 8 नंबर माने what did Gandhi scholarship thank for achieving? से जब भी स्कॉलरशिप पाते से काकू धन्यवाद दउतले। यह है तुमर क्वेश्चन। ये आसला तुम 2022 बोर्ड परीक्षा छने। तेणु दिस हैज टू बी रिमेंबर or put in the mind that this has already made existence or appearance in the examination. When something make appearance earlier, then it is very important to be noticed because it gives some indication for the repetition. It can get repeated in the future. So option being read as his teachers help. ताले जब भी से स्कॉलरशिप पाउतले शिक्षकों हेल्प को से धन्यवाद दउतले कि काकू से धन्यवाद दउतले। टीचर हेल्प को करतले ना इज टीचर्स एफेक्शन, शिक्षकों स्नेह ममता को से धन्यवाद जनाउतले जब भी से स्कॉलरशिप पाउतले। एमती कि ना गुड लक, ना से गुड लक को से माने धन्यवाद जनाउतले, ना हिज टीचर हेल्प, ना शिक्षक को हेल्प। Out of this 4 options, which one is correct, children? Can you tell me which one is correct? Children, remember that whenever Gandhi achieve any scholarship or any achievements that makes him glad, he always thanks to not his merit rather than his good luck. So A, his teacher's help will be incorrect, so it is invalid. It will be eliminated. His teacher's affection B. If you talk about the teacher's affection, children, this one B also will be cancelled because he never thank teacher's affection. His teacher's help, sorry, his father's help. This one, sorry, father's help. No, he has never or neither he seemed to be thanking his father help. Therefore, D also will be incorrect. So D also will be incorrect. So that means C is your answer. C is your answer. I hope you got that.
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛ ମାନେ ବୁଝି ପାରିଲ। Coming back to 9 number. This is your 9 number. You can see children these questions. After passing out of which standard did Gandhi even win prizes? क्यों स्टैंडर्ड से पास आउट कला पर से प्राइज मध्य जीतले? After passing out of which standard did Gandhi even won prizes? Option A is third standard, the first standard, or the fourth standard, or the second standard. Which one is your proper answer? Children, let me tell you, third stanza, this is not the correct answer to be given. Neither it is the first stanza, it is also not correct. Neither C, fourth, therefore D, the second standard, is your proper answer to be given. Right? So D is your answer. So coming back to another one. This is question number 10. How did Gandhi used to feel whenever he won prizes and scholarship? जेबे भी से प्राइजेस और स्कॉलरशिप पाउथले से किमिति अनुभव करुथिले? What was the feeling that Gandhiji have during the time Gandhiji did have during the time when he was welcomed with prizes or scholarship? Option being pleased, means what kind of a feeling he achieved? Was he pleased, or astonished, or depressed, or not excited? पिला माने जब से पुरस्कार बा स्कॉलरशिप पाउथले से ऑप्शन ए प्लीज माने कोन खुशी, ए ऑप्शन ए रहला तुमर खुशी आनंदित, बी कोन एस्टोनिश माने सरप्राइज हेगला ना, और डी हला डिप्रेस माने हताश, हताश तो केबे नेगेटिव वर्ड, ये तो हेबो नाही, ये हताश तो हो नतले, सी इज रॉन्ग। एक्साइटेड अधिक उत्साहित होतले एटा भी हो नतले, ताले सी और डी भूल हबो हेला चमने। प्लीज ए यह भी आनंद भी होनतले, एस्टोनिश होतले, आश्चर्य होतले, आश्चर्य माने तांकु लागुतला मु भी स्कॉलरशिप पाई परबे कि एमती भाबे कि से आश्चर्य होतले, एस्टोनिश मीन सरप्राइज टाटल है ना। नेक्स्ट को जिबा।